Alright, so before we get started, I want to talk about the One Football app, which is my go-to football app for all of my footballing needs. To be very honest, if I have to know about any news about my favorite teams, my favorite leagues, I will go to the One Football app. It contains lineups for all of my matches. It also gives me updates about my favorite players, by the way, because all you have to do is just click on the bell icon on top of your favorite players and you will get real-time updates about when they score a goal, when they give an assist, or when they are involved in a team which wins a particular game. So for example, Kai Havertz scores a goal, bam, you get the update about it on your One Football app. So what are you waiting for? Just download the One Football app from the link in the description below, and I'm pretty sure you'll enjoy it. ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि जूम बाबा ने मुझे टाइम नहीं दिया ज़्यादा, तो हम वापस आ गए। जूम बाबा हैज स्टार्टेड द टाइमर, द स्टॉप वॉच इज ऑन। तो ये दो चेहरों के इंट्रो में और नहीं देना चाहता। आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। तो स्ट्रेट अप स्टार्ट करते हैं विद a point that सादिक भाई wanted to talk about बार्सिलोना। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा उसका, तो आप कैच अप कर सकते हो कि प्रीवियस वीडियो में क्या हुआ था। तो सादिक भाई, you wanted to talk about Ferran Torres, right? You want to convey a point regarding Ferran Torres. What was that? जैसे कंटिन्यूशन ऑफ दैट कि जो हम बात करते हैं कि फरहान टोरेस, आंसू फाटी ये सब अवेलेबल होंगे, तो वेयर हु विल फिट। और फरहान का जो सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में, जो मतलब सेकंड हाफ नहीं, एक्चुअली द लास्ट क्वार्टर ऑफ द सीजन में जो थोड़ा सा उसका परफॉर्मेंस डिप किया है, अगर आप नोट करो तो इट हैज कोइंसाइडेड विद द टाइम पीरियड व्हेन पेड्री हैज बीन आउट एज वेल फॉर बार्सिलोना। एंड इफ यू सी दैट फरहान टोरेस केम इन द विंटर ट्रांसफर विंडो, तो जब वो विंटर ट्रांसफर विंडो में आया है तो उनको इतना टाइम नहीं मिला है टू एडजस्ट विद द टीममेट्स। तो व्हाइल प्लेइंग द गेम्स, द फ्यू टीममेट्स दैट ही इज क्लिक्ड ऑन वेल, अगर आप देखो जब जॉर्डी एल्बा, पेड्री और फरहान टोरेस लेफ्ट विंग पे खेलते हैं, दे क्रिएट अ लॉट ऑफ मतलब अ लॉट ऑफ चांसेस एंड अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एक्शंस आर गोइंग ऑन इन दैट एरिया। इसकी वजह से बहुत कुछ गेम ओपन होती है। When Pedri goes away, now he has to play either with the Frankie De Jong or with the Gavi. It's not that he cannot connect with them. अभी उसका chemistry develop नहीं हुआ उतना, and they are different type of players as compared to a Pedri. Similarly, जब आप देखोगे और साथ ही साथ जब आपका जेरार्ड पीके भी उसमें आउट हो जाए, the guy who was getting them the ball, तो Jordi Alba has to take up some of that ball playing responsibility by diverting his game inside. मतलब वो एक inverted fullback बन जाते थे कभी-कभी to be that ball player. तो it disrupted the whole system and the whole ecosystem जो फरहान के इर्द गिर्द बना हुआ था। So when the ball is not going in the right direction, he does not have the right out, क्योंकि फरहान टोरेस द प्लेयर जो कि अगर उसके साथ खेलने वाले प्लेयर्स होंगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से सिस्टम को, मतलब अगर आप उसकी गिफ्ट सिस्टम बना रहे हो तो every piece has to work around him. All the other pieces can work around him, but for that he needs an off season and time to practice with them and to develop a chemistry with them. I would say Farhan and Ansu Fati could be a brilliant pair जो कि switch in and out कर सकता है, left wing से inside, inside से left wing. But the thing is कि Ansu Fati now when he's coming back, so Javi said, I asked Ansu where would you like to play the best. He said left wing because that is his more natural position. And when you're coming back from recurrent injuries, going back to a natural position is the ideal way to go forward. Right. But I think over the off season, there will come a plan, and also हमें तब तक पता चल जाएगा who is our right wing going to be. Or will we have to readjust? Imagine if we get a Lewandowski. Lewandowski moves into the center for sure. Then probably we'll have to shift Farhan to the right, and then Farhan will have to build up a chemistry with Lewandowski as well as switching of the flanks with Ansu Fati. So that will come, क्योंकि इस दफा आपका ऑफ सीजन भी 3 महीने का होगा तकरीबन, because it's all starting in June. आपके ट्रांसफर्स वगैरह सब जल्दी हो जाएंगे because June 1st से ट्रांसफर विंडो शुरू कर रहे हैं because of the World Cup. करेक्ट। बट आपने जो एक चीज बोली थी ना कि आपको फेरान टोरेस का इज अ प्लेयर जिसके अराउंड आप अगर सिस्टम बिल्ड करोगे तो फेरान टोरेस और ज्यादा शाइन करेगा। ग्रेट point to probably transition into where I wanted this particular podcast to go to was Chelsea, and that player being Romelu Lukaku. Ye would you, because now that
probably the season is going to get over. 2 ही मैच बाकी हैं. It's good to just wrap up the season with this particular scenario or with this particular conversation कि रोमेलू लुकाकू के ऊपर जितना फ्लैग मिला था हमको शुरुआत के सीजन में और अब तक भी जो फ्लैग मिलते आ रहा है काफी टाइम से, बट इट्स काइंड ऑफ बिकमिंग क्लियर टू अ लॉट ऑफ फैंस कि यार ये सिस्टम उसके लिए बैठता नहीं है. एंड आप जानते हैं इट्स 90 मिलियन 95 या 90 जितना भी प्लस 90 प्लस मिलियन उसके लिए पे किया है. उसकी गलती नहीं है ना यार कि उसने तो बोला नहीं कि भाई 90 प्लस मिलियन पे करो. उसकी तो गलती नहीं है. तो हमारे साथ मैग्वायर के साथ होता है यूनाइटेड में 80 मिलियन हमने पे किया ना, उसने थोड़ी बोला 80 मिलियन पे करो. हाँ, उसकी तो गलती नहीं है. तो एज अ फैन आई एम थिंकिंग कि यस आई शुरुआत में तो मैंने स्टैंडर्ड डेफिनेटली थोड़ा मैंने किया था लुकाकू को, बट आफ्टर दैट आई रियलाइज्ड कि यार लुकाकू इज अ प्लेयर हु नीड्स क्विक पासेस इनटू स्पेस. ठीक है, who needs quick early crosses from the wings. ठीक है, because he is making those early runs whenever we start attacking. He is making those early runs, but it's just that we are so slow in our build up. We are so slow in our progress, in our ball progression कि we think that Lukaku is rendered मतलब ineffective because after that initial quick movement Lukaku slows down. ठीक है, after that initial quick movement Lukaku slows down and he's just shielding people around them. But nobody realizes the fact that if you just in that split second, Kovacic has done this quite a lot of times, in that split second if you just pass it to Lukaku, if you just pass it into space, not to feet, if you pass it into the space that Lukaku is running onto, he can probably render a shooting chance. ठीक है, he can probably render shooting chance for you. So my question here is this कि is this a disappointing season for Lukaku or is it the fact that bhai we have missed the trick with him? I think Guruji it's a little bit of both. It's a little bit of both क्योंकि एक तो इतना बड़ा जब साइनिंग आता है ना तो उसकी बाकी चीजें भी कि वो क्या बोल रहा है क्या कर रहा है that has to play a part in it. तो वो जो इंटरव्यू वाला सारा सागा था जो कुछ था उसमें अभी नहीं बोलूंगा लेकिन दैट प्लेड अ रोल कि बेस्ट कि जब लुकाकू आया, एक तो लुकाकू के साथ सबसे बड़ा इशू ये है ही इज अ 6'3" 220 पाउंड हल्क ऑफ अ मैन. ठीक है ना, उस प्रोफाइल का जब भी आप स्ट्राइकर देखते हो तो आपको लगता है कि यार दिस विल बी अ इनसाइड द बॉक्स स्ट्राइकर, इसको हम बॉल पिंग करेंगे एंड ही विल विन बॉल्स एंड ही विल स्कोर. But Sadiq bhai, you're doing that Manchester United mistake again. No, you're doing that Manchester United again mistake with him. That is the problem. That is what I'm trying to tell you. Exactly, मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि लुकाकू का वो गेम नहीं है. लुकाकू एक टारगेट मैन की बॉडी में एक मोबाइल स्ट्राइकर है. हाँ, अगर लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ. हाँ, वो भागेगा, वो रन निकालेगा, आप उसको बॉल दो, या तो वो शॉट मारेगा या वो बॉल को थोड़ी देर के लिए रोकेगा, उतनी देर में दूसरे बंदे को उसको साथ देना, रन देना है. हाँ, रन देना है. एग्जैक्टली, आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्राइकर उसके साथ खिलाना पड़ेगा. लुकाकू इसलिए लोग कह रहे थे वर्नर और लुकाकू विल बिकम अ थिंग. इसलिए लोग कह रहे थे क्योंकि पीपल रियलाइज्ड कि लुकाकू का रियल गेम सेंस क्या है एंड उसको कौन कॉम्प्लीमेंट करेगा. उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा कोई फास्ट पेसी सेकंड स्ट्राइकर लाइक टीमो वर्नर. बीच में ना, इसीलिए बीच में एक डबल स्ट्राइकर वाला फॉर्मेशन पे भी हम आ गए थे जहाँ पे एक नंबर 10 खिला रहे थे, हम 2 स्ट्राइकर खिला रहे थे सामने. ठीक है, जहाँ पे लुकाकू एंड जिएश वर आल्सो बीइंग पेयर्ड टुगेदर एंड लुकाकू एंड वर्नर वर आल्सो बीइंग पेयर्ड टुगेदर, बट समहाउ both of them didn't exactly click together with Lukaku and I don't think so that is Lukaku's fault. उसमें पता है क्यों हो रहा था? What I realized was अगर आप उसके इंटर मिलान के भी शुरू के गेम्स देखो, हाँ, शुरू के गेम्स में लुकाकू इतने गोल नहीं मार रहा था, लोटारो मार्टिनेज ज्यादा गोल मारा, बहुत गोल मारता. करेक्ट. होता ये है कि टीम क्या सोचती है कि लुकाकू गोल मारेगा, ही इज दैट बिग स्ट्राइकर, इसको कवर करो. तो इन द फर्स्ट फ्यू गेम जब आप लुकाकू के साथ सेकंड स्ट्राइकर भेज where Chelsea was missing the trick, Chelsea was asking Lukaku to give that final run और बॉल प्ले करते थे वो टीमो वर्नर को कि भाई ये टीमो वर्नर इसको बॉल देगा. Just like Benzema and Vini.
हाँ बेंजेमा वर्नर या इजीली हैवर्ट्स is को there. बोलो तुम सेकंड रन बनाओ, सही बोल रहा है। शुरू के मैचेस में 5-6 मैचेस में लुकाकू असिस्ट निकाल के देगा, गोल नहीं मारेगा, वो बॉल प्ले करेगा दूसरा बंदा। बाय द टाइम द टीम्स विल रियलाइज कि यार ये तो अब हैवर्ट्स गोल मार रहा है, वर्नर गोल मार रहा है, दे विल स्टार्ट लीविंग लुकाकू अ लिटिल बिट फ्री एंड देन ही विल गो ऑन टू दैट फ्री फ्लोइंग गोल स्कोरिंग फॉर्म। द वे तो हाँ ये जो बेंजेमा वाला जो एग्जांपल दिया ना, आई वांट टू टच ऑन दैट एस्पेक्ट ओनली। लुकाकू हैज प्लेड in that roaming striker wala position a couple of times, but not too many times to make it stable, to make that position, to ensure stability for him mentally कि भाई ठीक है मुझे ये role मिल गया है, and others can also probably understand the fact that I am a roaming striker and I can connect well with others around me. He's not gotten that responsibility enough within the system. सेकंड स्ट्राइकर वाले सिस्टम में कितने मैच खेलो आप लोग? हमने कितना खेला है भाई? 6-7 खेलोगे मैक्स टू मैक्स 6-7 खेलोगे। लुकाकू वर्नर लुकाकू जियश वैसा हमने रोटेट किया है। लुकाकू वर्नर की पेयरिंग कितने में थी? मुझे याद नहीं वो कितना हो गया, 4 हो गया मैक्स, 3-4 होंगे। उसके बाद वर्नर सब्स्टिट्यूट हो जाता था, फिर जियश मोटा आता याद था। है? हाँ मोटा याद है कितने गोल, कितना जीए निकाला होगा उस वक्त दोनों वर्नर उससे? आई रिमेम्बर वन गेम जिसके अंदर वर्नर ने हैट्रिक निकाली थी। हाँ हैट्रिक नहीं, हैट्रिक तो कभी नहीं, हैट्रिक भाई नहीं, हैट्रिक कब नहीं। निकाले? हैट्रिक नहीं निकाली है, बट मैं जेन्युइनली ब्रॉडली बोल रहा हूँ। वर्नर हाँ हाँ मैं ब्रॉडली बोल रहा हूँ। ये एक गेम याद है जिसके अंदर वर्नर स्कोर्ड अ लॉट ऑफ 2 गोल्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ 2 गोल्स ले ले है ना, उससे हाँ, ऐसा भी रिसेंटली कोई गेम हुआ था। हाँ लेकिन वो हैवर्ट्स के साथ था वो उसका। साउथहैम्पटन था ना, वो साउथहैम्पटन में, मतलब साउथहैम्पटन में तो लुकाकू नहीं खेला था। अच्छा नहीं, नहीं मेरे को, मैं सेकंड, अभी तो लुकाकू को मैं ला नहीं रहा उसके अंदर, इक्वेशन में नहीं ला रहा, मैं सेकंड स्ट्राइकर वाले सिस्टम को ला रहा हूँ। सेकंड स्ट्राइकर वाले सिस्टम को ला रहा हूँ कि सॉर्ट ऑफ चेल्सी के साथ, लाइक यू सी दिस की दे आर टू ग्राउंडेड टुवर्ड्स देयर ओन सिस्टम कि फॉर समवन एल्स टू पुट समवन लाइक लुकाकू इन देयर एंड एक्सपेक्ट कि तुम थोड़ी ट्विकिंग के साथ यू आर गोइंग टू रन अ प्लेयर लाइक लुकाकू। आई डोंट रियली थिंक यू कैंट रियली पुल दैट ऑफ। These great players, क्योंकि लुकाकू अपने आप को ऐसा नहीं है यार, तुम कोई ये नहीं कह सकता लुकाकू ने अपने ऊपर का जो प्राइस टैग था वो जस्टिफाई नहीं करा था इन टर्म्स ऑफ हिज परफॉर्मेंस एट इंटर मिलान। ठीक है, उसकी जो इंटर मिलान वाली परफॉर्मेंस थी दैट डिमांडेड हिम अ वर्ल्ड क्लास मूव एट अ वर्ल्ड क्लास प्राइस। That demanded also, I'll tell you, that demanded a midfielder who gives him the ball consistently. ठीक है, Nico Barella. Now that comes down to Chelsea. That comes down to Chelsea. When you have brought him in, you need to look. ऐसा नहीं है कि तुमने बस 100 मिलियन खर्च दे किसी स्ट्राइकर के ऊपर तुम उसे ले आए एंड उसके बाद भाई ये रही हमारी टीम जो इंटर में करा था ये यहाँ कर। वो बोले इंटर में मेरे पास लोटारो मार्टिनेज था, मेरे पास बरेला था, you need to pass the ball to him at, he makes so many runs, it is baffling that we can't find him. हकीमी भी था उसके पास, हकीमी था। मैं याद करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मेरे को अच्छे से याद है बहुत सारे क्रॉसेस आते थे उस राइट साइड से फॉर लोटारो मार्टिनेज एंड दूसरी तरफ वो था आपका पेरिसिच था। हमारे पास रीस जेम्स भी था एंड शुरुआत में रीस जेम्स एंड लुकाकू क्लिक्ड रियली वेल टुगेदर, नो डाउट अबाउट दैट, बट from a central perspective, central progression towards Lukaku has always been a problem for us, because apart from Kovacic I don't see a person who's probably giving balls to Lukaku. Mount is supposed to be a number 10, but Mount is the only natural number 10 within our squad, and it's baffling कि मतलब हमारे पास जब हमको अगर सिस्टम अगर चेंज भी करना होगा, अगर 4-3-1-2 अगर करके कुछ करना होगा जहाँ पे हम 2 स्ट्राइकर को सामने खिला सके, माउंट इज आवर ओनली नेचुरल नंबर 10, हकीम जियेश इज नॉट अ नेचुरल नंबर 10। ठीक है, माउंट इज आवर ओनली नेचुरल नंबर 10। तो अगर आपको लुकाकू को सेकंड स्ट्राइकर के साथ खिलाना भी है तो आप अपना सिस्टम ट्वीक भी कैसे करोगे अगर पर्सनली नहीं है? तो आपने लुकाकू को लाया ही क्यों है देन? गुरुजी आप लोग ने ना पिछले 3 मैचेस में ना अभी आई थिंक फाइनली टुकल हैज सॉर्ट ऑफ फिगर्ड आउट अ सिस्टम वेयर इट्स नॉट लाइक 2 स्ट्राइकर्स, इट्स लाइक 1 स्ट्राइकर एंड 2 सेकंड स्ट्राइकर्स के साथ आप खेलते हो, लाइक यू गो इन दैट 3-4-2-1 काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन। आपको मैं लिवरपूल की बात बताता हूँ।
ठीक है, आपको लिवरपूल की बात बताता हूँ। ठीक है, हम 4-2-3-1, बाद में हमने 4-2-3-1 पे चेंज कर दिया था। ठीक है, वंस आई विल टेल यू व्हाई वी डिड दैट वाज, जब हम तीन सेंटर बैक वाली चीज कर रहे थे, देयर थ्री ओपोनेंट्स पिन्ड आवर थ्री सेंटर बैक्स। ठीक है, हमारे फुल बैक्स वर वे हायर। ठीक है, एंड आवर फुल बैक्स वर सो हाई दैट यू नो their center backs were given the license to just have the ball and distribute the ball evenly, because Lukaku was not exactly pressing those two center backs at all. ठीक है, तो जब उनके पास इतना फ्रीडम हो रहा था टू पास द बॉल एंड लुकाकू वाज नॉट इवन गिविंग कवर शैडो टू हेंडरसन, वी ओनली हैड वन डबल पिवट। ठीक है, वी ओनली हैड वन डबल पिवट इन जॉर्जिनियो एंड कोवाचिच। जॉर्जिनियो कोवाचिच को ऑक्यूपाई कर रहे थे दोनों लिवरपूल के सेंटर मिडफील्डर्स। माउंट तो अपना राइट पे था। ठीक है, लेफ्ट पे हमारा पुलिसिक था। ठीक है, तो आपके पास इधर ये दोनों भी आपके ऑपोजिशन फुल बैक्स को कवर कर रहे हैं, तो बीच में तो कोई है ही नहीं हेंडरसन को बॉल देने को। तब हमने चेंज किया 4-2-3-1 को। ठीक है, 4-3-1 को चेंज किया तो पुलिसिक नंबर 10 आ गया। पुलिसिक नंबर 10 आ गया तो लुकाकू को बोला कि भाई तू सामने ही रहे, पुलिसिक विल कवर हेंडरसन एंड ही विल आल्सो मेक श्योर दैट आप लोग 4-2-3-1 गए थे या आई फेल्ट इट वाज अ 4-2-3-1 5-2-2-1? 4-2-3-1 हम लाइक मैंने बैच भी वापस देखा था, हम 4-2-3-1 गए थे प्रॉपर। ठीक है, हम 4-2-3-1 गए थे सो दैट, क्योंकि माने भी वाज ड्रॉपिंग डीप, माने वाज ड्रॉपिंग डीप टू क्राउड आउट अ मिडफील्ड, बिकॉज दे न्यू दैट जॉर्जिनियो एंड कोवाचिच वर हैविंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, because Henderson is getting onto the ball, so Henderson was engaging one of Jorginho and Kovacic, and that is when Mane was dropping deep to make it 3v2। ठीक है, तो आपको 3v2 वाली सिचुएशन हो गई थी, इसलिए पुलिसिच हैड टू कम इनटू द नंबर 10 वाला रोल एंड वी हैड टू मेक इट 4-2-3-1। ठीक है, तो जहाँ पे रूडिगर बिकम्स लेफ्ट बैक एंड अलोंसो बिकम्स अ लेफ्ट विंगर। ठीक है, तो वो चीज हो गई थी एंड दैट इज उधर उधर जब मैं ये चीज देख रहा हूँ, दैट इज माय प्रॉब्लम अगेन विद लुकाकू, इज द फैक्ट दैट ही इज नॉट अ विलिंग प्रेसर ऑफ द बॉल। He's not a willing presser of the ball. He's not intelligent enough to probably give cover shadows to the opposition players right now. ठीक है, and you would need a natural number 10 to support him at all costs. ठीक है, at all costs, if you have to probably integrate him into a proper system. ठीक है, तो where is your scouting acumen here when you're getting a 95 plus million striker into the mix and you are expecting him to adapt to your situation, which is not his fault, that the price tag is not a player's fault at all. ठीक है, तो how are you expecting that particular player to adapt to your system? It will not happen. It will not happen. That is my, I think that is my qualm about him. ठीक है, it's not like I'm supporting him completely. ठीक है, I'm just thinking that ये player slander वाली जो बात है ना, जो मैंने previous podcast से इधर की थी, player slander वाली बात मुझे काफी वियर्ड लगती है कभी कभी, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट प्लेयर, दैट इज क्रिस्टियन पुलिसिक। ठीक है, नाउ क्रिस्टियन पुलिसिक, भी हमें विनायक के साथ भी डिस्कस करा था, क्रिस्टियन पुलिसिक against Liverpool was given both the responsibilities of attacking in the of being involved in the attacking third and also cutting balls to Henderson. ठीक है, and also giving cover shadow to Henderson. ठीक है, because if the ball comes to Henderson, then your midfield will be bypassed because you are outnumbered, because Mane is dropping deep from his false nine position. कोई और आता, आप लोग की मिडफील्ड वाज नॉन एग्जिस्टेंट। वो शुरुआत में वही हो रहा था, शुरुआत में तो वही हो रहा था। ठीक है, because it was basically Jorginho, Kovacic, ठीक है, माने ड्रॉपिंग डीप एंड यू हैव Henderson Thiago there। ठीक है, सो इट्स 3v2। ठीक है, सो वैसे ही हो रहा था। और आप लोग थोड़ा कंसंट्रेट थियागो पे करते थे एंड हेंडरसन वाज हैविंग अ ब्यूटीफुल गेम ऑन द अदर साइड। तो आप वही चीज हो रही थी, तो इसीलिए मैं वही बोल रहा था कि वी नीडेड अ नंबर 10 एंड नंबर 10 बिकेम पुलिसिक, एंड पुलिसिक के पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अटैक भी करना, डिफेंड भी करना, एंड ऑल्सो द फैक्ट कि मेसन माउंट ट्रैक बैक में बहुत पीछे जा रहे थे, ट्रैक बैक वो बहुत रेडिली नहीं कर रहे थे मेसन माउंट ऑन दैट पर्टिकुलर फ्लैंक, सो एंडी रॉबर्टसन हैड अ फील्ड डे। ठीक है, हैड अ फील्ड डे एंडी रॉबर्टसन ड्यूरिंग द गेम, एंड उधर भी पुलिसिक हैड टू कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड। ठीक है, सो
when I'm looking at different games as well for Pulisic, he has been an energy ball for us. Okay. He has bended his runs twice or thrice during a game and he's still not been found by a Chelsea player. Okay, because our progressive passing is pretty bad. Okay, we don't play too many progressive passes in a game. Okay, it's a lot of sideways passing and cross inshallah. Okay, that is our game. Okay, so how do you expect a Christian Pulisic to flourish is my point. ठीक है, and once he, and also the point is कि अगर आप चाहते हो क्रिस्टियन पुलिसिक फ्लरिश करे, he's 23, correct me if I'm wrong, ठीक है, he's still young, ठीक है, तो आप एक 23 years से आप एक्सपेक्ट करो कि आप उसको रोटेशनल बना दोगे एंड he will give you returns. How is that going to happen if this is the third season for him as well and he's still a rotational option for you? How is that going to happen? ठीक है, आप फिर भी he has given you goals in some really crunch games. He's been one of our best players in the post-lockdown era, which was extremely important. That phase was extremely important for Chelsea as a club, as a whole. That phase was extremely important because अगर हमको Champions League place नहीं मिलता उस time पे, ठीक है, then probably all of these starry signings जो हुए हमारे, हकीम जियेश को ले लो, काई हावर्ट्स को ले लो, टीमो वर्नर को ले लो, क्या वो होते? Doubts. I have my doubts. ठीक है, if we would not have played Champions League. Willian and Christian Pulisic, Olivier Giroud made sure that happened. That's a huge contribution in itself. So are we discounting it readily? What do you guys think? Matlab, this player slander thing, are we just discounting all of this readily and saying that, okay, fine, we lost the game because of Christian Pulisic and we lost this game because of Christian Pulisic, we lost that game because of Christian Pulisic. Nobody realizes the fact that he scored the winner against West Ham. Are we just like just blind in this universe about just hating one player? We hate Lukaku. If Lukaku fucks up, okay, fine, Lukaku की वजह से आ रहे. If Christian Pulisic, we hate Pulisic fucks up, okay, fine, we hate Pulisic की वजह से आ रहे. Is this a trend? And what do you guys just think about this trend? Because this is not a trend when I started following football, to be very honest. नहीं, आज के टाइम पे तो ऑब्वियसली गुरुजी ये हो गया है, because I still remember when I started following football, उस वक्त आप से डिस्कस करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, and उस वक्त it was a much healthier discussion in the sense कि if you felt something was wrong with the team you followed or the player you really followed a lot, so you would discuss with your friends and they would come back to you with counter arguments as to why you are right and with arguments why you're right or why you're wrong. और उस वक्त क्या था, अभी ये है कि सोशल मीडिया में ना, say for example, kal in the watch along we had a little discussion. A couple of people came with an opinion, by Pulisic had this, Pulisic did not have a good game. Before hearing the other side, वो चीज एक तरीके से ट्रेंड करना लोग शुरू कर देते हैं, क्रिस्टियन पुलिसिक had a bad game. फिर क्या होता है, it takes on a life of its own. Unfortunately, that is a side effect of the times that we are living in right now. With all that social media furor around us, I mean, if social media नहीं होता, probably we would not be talking to each other also right now. So that is a positive and a negative of that game. पर उसमें फिर ये जरूर होता है कि player slander ना बढ़ जाता है उसमें, कि उसमें ये होता है कि भाई एक narrative बन जाता है, and then everyone has a media outlet in the palm of their hands, and everyone makes the point कि भाई let the world hear us out. फिर क्या होता है, that hear us out में फिर then it becomes a cacophony of sound against that one particular person. My confusion regarding this is, I'm not just talking about player slander here, I'm just talking about, again, reverting back to Pulisic as well. Muktesh, तू भी add कर सकता है इस point पे कि when you were berating Timo Werner before all of this happened, ठीक है, I think 4 months back you were like, Timo Werner is probably the worst striker you've ever seen in life, ठीक है. Cut to the final yesterday and cut to the last 1 month, you were saying, by Timo Werner needs to start. Timo Werner needs to start. Bhai, this is I think the volatility of fan bases is very interesting. Is a very interesting psychology.
ठीक है, and it is so interesting as to somehow मतलब you try to search for answers like why is this happening, ठीक है, is this only happening because of Warner's performances? Because Warner's performances haven't been too great, they have been bang average, ठीक है, but people still expect the fact that Warner will make those in behind runs and will trouble Liverpool's defense, blah blah, and इसीलिए he has to start. But what is the big difference that will probably bring over Christian Pulisic? What is the big difference that, you know, playing Lukaku the right manner, if you had played Lukaku in the right manner, do you actually still feel that Kai Havertz would have been a better acquisition, or do you think that Kai Havertz would have been in a better position for Tuchel's system if you would have played Lukaku as he would have wanted to play? So ये सब जो questions हैं, again just जब कोई लाइनअप बनता होगा, like for example कोई लाइनअप बनाया गया है, whether it is Chelsea's lineup against the match, you know, for Liverpool, it's the FA Cup finale, and Tuchel is choosing players, so I'm pretty sure कि हर match में, whether no matter how big or small it is, the lineup would be chose thinking कि ठीक है, इस opposition को break करने के लिए, first of all let's assume कि हमारे सारे players are gonna play their best game today, ठीक है, because you never know which player is obviously going to play what kind of a game. तो अगर तुम्हारे सारे player, या तो तुम्हारे कोई player की form बहुत खराब चल रही हो, then it is a completely different argument, but you have got a certain amount of players who are performing very mediocre, like mediocre in terms of उनकी average performance रह रही है in matches, week in week out. They haven't been bang on for past few matches, like they haven't been Benzema level, but they also haven't been Asensio in league level. Asensio in league is a different shithousery at moments. ठीक है, at moments. तो या तो उस level का भी नहीं है. So that is what makes it a different argument. But if you have got a lot of players like Rodrigo level, ठीक है, then you have to choose कि अब इनमें से कौन सी ऐसी चीज है, कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हमें इस मैच के अंदर चाहिए. Whether do I need wow, what a भाई मेरी मेमोरी, कौन है आपके, क्या कहते हैं स्ट्राइकर का नाम? Lukaku, Havertz, नहीं तीसरा वर्नर. हाँ. whether you need Werner के in behind runs, or you need someone who can captivate the ball, dribble, or sort of arrive at places at time. अगर क्लॉप को लगा यार कि ठीक है, अगर टुकल को लगा यार, I need someone who can captivate those moments, who can actually skill wise drop down to the midfield, technical player मुझे थोड़ा चाहिए, जो कि कर रहा था, Pulisic कर रहा था. I could see bits and all of that. So it all comes down to manager की choice for that specific match. If you felt like कि, like obviously I know कि क्योंकि Chelsea fans काफी angered हो गए जिस हिसाब से Pulisic ने chances छोड़े थे इस मैच के अंदर. But to make this fair argument कि Pulisic को start ही नहीं करना चाहिए था and Werner को start करना चाहिए था, that would be like questioning कि manager को क्या चाहिए था उस मैच से. Correct. What if Werner को वो chances ही ना मिलते जो Pulisic को मिले? और एक चीज जो थी, both of you can chip in for this, is not every shooting chance is a scoring chance. ठीक है, मतलब my problem is this, ठीक है, genuinely in every game there are lot of people who feel that मतलब ये एंगल, ये इधर से गोल मारा गोल होना चाहिए था, इधर से गोल मारा गोल होना चाहिए था, but it depends from player to player. ठीक है, it depends from player to player. अगर player, I'll just give you an example. If the player is Lewandowski, ठीक है, if the player is Lewandowski, ठीक है, and he shoots from the near post, ठीक है, he shoots from the near post and he's on the stride just outside the box, he shoots from the near post, ठीक है, it's a very tight angle but the ball doesn't go, people say goal होना चाहिए था because expectation Lewandowski, ठीक है, but अगर if it's like let's say a Mason Mount, ठीक है, I'm talking about Chelsea fans, let's say it's a Mason Mount, ठीक है, and अभी सेम एंगल से उसने गोल नहीं मारा, ठीक है, हम सिंपथाइज करेंगे बिकॉज मेसन माउंट इज आवर गाय, ठीक है, वी विल सिंपथाइज सेइंग दैट यू नो टाइट एंगल, ठीक है, टाइट एंगल.
what do you have to say about this? मतलब about this particular fact कि not every shooting chance is a scoring chance. एक चीज पूछते हैं यहाँ पे आप दोनों से ट्रिविया. रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने अपने करियर में कितने गोल मारे होंगे? Above 500 for sure, है ना? How many has he scored, Sadiq bhai, if you have any idea numerical wise? मुझे तो नहीं पता, लेकिन आई थिंक 500 नहीं होंगे, कम है उससे. 500 से कम है थोड़े? 400 के करीब है. 350 400 350 इतने कम थोड़ी हैं. आई थिंक सो. इतने ज्यादा नहीं है भाई साहब. 350 गोल बहुत ज्यादा गोल होते हैं. अरे नहीं 500 तो भाई वो तो उसने मारे हैं ना, सुआरेज ने मारे हैं ना 500 गोल तो. हाँ ठीक है, सुआरेज ने मारे, मतलब जितने ही मारे हैं. तो एक एस्टिमेट लेते हैं रफ, कितने गोल्स होंगे उसके फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉक्स? कितने होंगे assumption? सादिक भाई एक नंबर. आउटसाइड ऑफ द बॉक्स 100 नहीं, कम 100 सादिक भाई आप नंबर बोलो एक. मैं बोल रहा हूँ 50 से कम होंगे आउटसाइड द बॉक्स. 50 ठीक है. लेवेंडोस्की has scored 12 goals from outside of the box in his career. Fucking hell. 50 से कम होंगे. He has scored 12 goals from outside of the box. It's the same. ये मेरे को of course मैंने भी kind of same. It's kind of the same with Erling Haaland. वो भी मैंने so check that is किया. what so ये आपके ये पॉइंट को बैक करने के लिए this is what I'm saying. See, I would not really back Pulisic in this discussion. Lewandowski has around 390 club goals and 75 international goals. हाँ तो वो all together कितने हो गए? हाँ तो that I was thank God I was close. 460 somewhat, लेकिन thank God I was close. हाँ तो मेरे को लग रहा था, मैं कहा 450 क्लब की गिन रहा था, मैं शायद क्लब की बात कर रहा था. नहीं मैं ऑल ओवर बात कर रहा था. 450 से ज्यादा तो मेरे को था. 450 के करीब है ओवरऑल. हाँ तो basically what I wanted to say is कि ठीक है इतने गोल्स मारने के बाद भी Robert Lewandowski has got 12 goals from outside of the box. I'm not going to back Pulisic for missing so many chances in that game, but at the same time I'm not going to put the entire team performance on one player missing all the chances. That would be like putting it all on Ferran Torres for our UCL our Europa elimination. Correct. It would be like that because I didn't really blame Ferran Torres for our Europa elimination. It would be like blaming Dembele for that 4-0 victory over of 4-0 comeback of Liverpool over us. क्योंकि Dembele ने 2 chances miss कर दिए थे first leg के अंदर. 3-0 वाली victory could have been 5-0 or 4-0 easily. क्योंकि Messi made 2 very मतलब 1-on-1 सिर्फ कीपर था सामने. Dembele missed those chances. So it would be like blaming him for that comeback. It would sort of be like that कि मैं Dembele को back भी नहीं करूँगा, but I wouldn't blame him. I think the team could have done a lot more things उसके अलावा. Pulisic, I think, as you said, is still 23. He brings a lot on the table, but I think for him to be that executionary was never the thing about him. हाँ, सही बोल रहा है. He was never the executioner. He was always part of the provider. Creation, even batting provider, creation. Dortmund days की अगर मैं बात करूँ, ठीक है? He was that creative guy. He was that linking guy. He was never the executioner. So, but obviously, काफी easy chances भी if you say that he missed. Obviously, उसके लिए उसको backlash करना बनता है. But you can't blame him saying that he has been very wasteful if he was never the executioner. It is like expecting Romelu Lukaku to play like Ferran Torres. Finish 7 out of 10 shots that he takes. So that is not that you can't expect realistically as well. मतलब in modern football, expecting Messi to hit 10 headers in every match. I think some of the flag that Christian Pulisic gets, I mean, obviously missing chances तो आप किसी को मतलब ठीक है, you I mean in a big game, a professional player, आप उसको कुछ तो criticism दोगे कि आपने वो chance miss किया. ठीक है, वो chance it was not created. Actually, chances are not created equal for every player. इसीलिए जब when someone comes, जो मेरा हमेशा pet peeve रहता है, when someone quotes me the XG stats and then they say कि यार he's going to come back to norm, he's overperforming his XG and stuff. I'm like, उस player को तो देखो वो कौन है. क्या ये XG जो आप एक नॉर्मल एवरेज प्लेयर का सबका एवरेज लेके कैलकुलेट कर रहे हो सारे लीग्स का, क्या मेसी के लिए वो XG अप्लाई करता है, रोनाल्डो के लिए वो XG अप्लाई करता है?
रोनाल्डो आउटसाइड द बॉक्स कॉर्नर्स को उधर से कर्लर मार रहा है, वो मारेगा, वो he is that great रोनाल्डो है, player. हाँ वो वो रोनाल्डो है। रोनाल्डो है या वो मेसी है या वो बेंजीमा है, वो मारेगा। बेंजेमा है, वो जो हाँ। हेडर था जो बेंजीमा ने चेल्सी के अगेंस्ट पहला वाला मारा, उसका प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस फॉर एनी अदर स्ट्राइकर, हाँ बट फॉर बेंजीमा इट्स एन XG of 1 बिकॉज दैट्स बेंजीमा। दैट्स बेंजेमा। लेकिन हम उस तरीके से कैलकुलेट नहीं करते ना उसको, तो इसलिए हम्म फिर बात वही आ जाती है कि आप तो कह रही चांस था क्या, क्रिस्टियन पुलिसिक इस प्रोफाइल का प्लेयर है कि वो बॉक्स के अंदर जाके उसको इतना चांस मिलेगा और उसको ऑन टारगेट ही मारेगा। ही इज नॉट अ फिनिशर। तो आप व्हाई आर यू, यहाँ पे फिर बात आती है कि भाई इट आल्सो कम्स डाउन टू द कोच एट सम, आई जस्ट ट्रांजिशन तो इनटू दैट मैं पार्ट। हाँ, वी आर आल्सो वाइंडिंग डाउन बिकॉज़ ज़ूम बाबा इज सेइंग 4 मिनट बाकी है भोसड़ी के, तो तो इसीलिए आई वाज कमिंग डाउन टू दैट पार्ट ओनली। Very quickly, let's take the comments on Tuchel, because I'll just set the precedent here. भाई साहब ने भाई मतलब he's fielded questions about the Ukraine war. He's fielded questions about player contracts. He's fielded questions about the club's future, and simultaneously he's also put teams out onto the pitch. That requires a lot of patience, and that requires a lot of loyalty. That requires And a don't lot of forget his smartness personal life. and his Don't personal life. forget the mess in his personal life. That requires a lot. That requires a lot from you. So what is your assessment on Tuchel? I think he's done a fabulous job. He's obviously done a fabulous job, but then he does deserve a little bit of criticism on the technical aspect of the game and some of the decision making he has done. Like yesterday, I was of the opinion that have we finally seen Tuchel overthink something out in yesterday's game? Yeah. True. Matlab, I know Pep Guardiola gets a lot of flack for overthinking, but then yesterday we probably saw Tuchel overthinking a little bit. क्योंकि आप वही बात होगी, आप बोल रहे हो ना कि पुलिसिक को उस पोजीशन में आप खिला रहे हो, अगर आप देख रहे हो कि भाई पुलिसिक को चांसेस मिलेंगे एंड ही इज नॉट अ फिनिशर, व्हाई टू पुट हिम इन दैट पोजीशन के बाद में फिर उसको इतना सारा क्रिटिसिज्म मिले। आप उस बंदे को लेके आओ जो उस जगह पे हायर प्रोबेबिलिटी रखता है उस चांस को फिनिश करने की। राइट। नहीं, I think the police substitution was too late. I think he should have been substituted in-game management early. questionable In-game है भाई management, Tuchel का। definitely questionable है, but on that note, I would just like to end the podcast, and ending note में बस यही बोलना चाहूँगा कि I think the season is a success because of the huge turmoil के साथ जो हम जी रहे हैं. Thomas Tuchel has been a role model because I don't think so any manager would have been in such a situation before. ठीक है, in professional football. ठीक है, अगर होगा तो प्लीज आप कमेंट से बता सकते हो कौन होगा। जो एक वॉर चल रही है उसके बारे में क्वेश्चन फील कर रहा है, प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्वेश्चन फील कर रहा है, नए ओनर के बारे में क्वेश्चन फील कर रहा है, सबके बारे में, एंड ही इज पुटिंग टीम्स आउट ऑन टू द पिच एंड ही इज कंटेस्टिंग अगेंस्ट लिवरपूल and contesting toe to toe. Bhai, I think so this is the third penalty shootout that we've gotten against Liverpool, so I think that is a commendable thing. Thank you guys for joining in, and to all the Chelsea fans out there, keep the blue flag flying high guys, and keep the hope alive. Cheers.